Hello everyone, and I hope everybody is doing perfectly fine. So today we'll be starting with our second chapter, that is inflammation. So today I'll be taking a very short lecture to just update you about what inflammation means exactly. Fine. So see, what is inflammation? जब हम पढ़ते हैं inflammation, whole chapter is about that. ठीक है? You get to know how the inflammation starts, then what are the different events which cellular events हैं, vascular events हैं, जो होते हैं during inflammation. Fine. So it's basically like how your body responds to certain kind of injurious agent. Fine. So it is a local response of living tissue to injury from any agent. Fine. So it's basically, you can say it's a body's defense mechanism which it is using to eliminate the unwanted or harmful agents, bacteria, virus, anything can be, fine, can be anything. So it is in this process what our body is doing, it is removing the necrosed cells and tissues. सो अभी हमने पढ़ा इंज्यूरियस एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं जो इंजरी कराते हैं हमारे सेल्स को, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है. इट्स बेसिकली जैसे यू कैन से जब सेल इंजरी हुई तो यू हैव इन रिस्पॉन्स यू हैव इन्फ्लेमेशन. फाइन. So what are the different injurious agent which leads to inflammation? So this can be your infective cause like bacteria, virus, fungi, then parasites. Then it could be because of necrotic tissue. Necrotic tissue can result from your various physical and chemical factors. Physical जैसे आप बोल सकते हो excessive heat, cold, ठीक है, radiation, mechanical trauma, or with chemical agents it can be because of organic or inorganic toxins. Then we can have immunological factors which can lead to inflammation like cell mediated immunity, or in body you can have antigen antibody reaction. Okay. So and sometimes in response to foreign agent, suppose कभी कुछ सूचर का टुकड़ा रह गया during surgery or during stitch, normal superficial stitch, you can say some suture particles can be there, can lead to such suture granuloma. So that is your inflammation, that is your response which your body is showing to that foreign material. Fine. Or due to thorn, okay, thorn, dirt, for any kind of foreign bodies can lead to inflammation. So what is the basic difference between infection and inflammation? Infection is like koi bacteria, virus या harmful microbes, you can say, as a whole, is they are invading your body and resulting in ill effects. So that is infection. Patient presenting with fever because of tuberculosis. So उसमें क्या हो रहा है? Mycobacterium tuberculosis अंदर आ रही है body के and patient is showing fever. So that is patient is being infected by tubercular bacilli. Fine. So what is inflammation? Inflammation क्या है? This is not infection. This is opposite to your infection. It is protective mechanism or response which your body is showing to different kind of injurious agent, which can be infectious or can be non-infectious also. So once your body has shown response to that injurious agent, so how it will look like? Suppose यहाँ invade किया किसी बैक्टीरिया ने, या यू कैन से एनी कोई थॉर्न गया यहाँ पे और सुपरफिशियल इंजरी हुई पेशेंट को, तो इन्फ्लेमेशन है, बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म विल ऑटोमेटिकली कम इनटू प्ले. सो पेशेंट विल शो certain signs. So there are basically 5 cardinal signs. 4 हम पहले से पढ़ रहे होते हैं, एक हमारा बाद में ऐड हुआ है. ठीक है. So it was writer Celsus, he was a Roman medical writer who had described your 4 cardinal signs of inflammation. Rubor, that is redness. Tumor, that is swelling, any kind of swelling. Calor is heat. Dolor is pain. And functio laesa, that was the 5th one, which was added later by Galen, that is loss of function sometimes. Fine. So these 4 cardinal plus 1, 5 cardinal signs you need to remember. ये बहुत कॉमन है जब भी आप एग्जामिन करते हो पेशेंट को, फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हो, जब आप देखोगे कोई सुपरफिशियल स्वेलिंग है तो हाउ यू एग्जामिन इट, साइज शेप तो देख लिया, लोकेशन देख लिया, फिर आप देखते हो कि कोई रेडनेस तो नहीं है मार्जिन पे, हम स्वेलिंग कितनी बड़ी है, कोई हीट वो है कि नहीं, टेम्परेचर आप देखते हो, जो भी इन्फ्लेमेशन वाले होंगे ना उसमें टेम्परेचर आप देखोगे थोड़ा गर्म होता है वो एडजेसेंट टिश्यू से, स्ट्रक्चर से. ठीक है. देन पेन, पेशेंट को आप दबाओगे तो साइन है कि पेशेंट विल विंस.
So that is patient is having pain. And fifth is the function, loss of function. Sometimes because of inflammation can be, patient may not have sensation in that particular area. So ये हो गया हमारे साइंस कैसे दिखते हैं इन्फ्लेमेशन में. फाइन. So now we need to know what are the different types of inflammation. So depending on your, this all depends on the capacity का host, ये host की capacity कितनी है and duration कितना है response का. Fine. So it is a basically defensive capacity of host and duration of response. So duration देखो, acute as the name suggests it is of short duration. Immediately inflammation के signs आएंगे और ये last करता है less than 2 weeks. It is an early body reaction. ठीक है, and it resolves quickly also, and this is followed by healing. Healing भी we'll read in detail after once we finish with inflammation. Then chronic, name suggest कर रहा है chronic is of longer duration. एक डिले के बाद होता है. Usually after acute phase के बाद you have your chronic phase. इसमें क्रॉनिक क्यों है? बिकॉज जो एजेंट है जो इंजरी करा रहा है, इन्फ्लेमेशन उसके बाद हो रही है, वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट कर रहा है हमारी बॉडी में. ठीक है, सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आ जाता है. देन समटाइम इट कैन बी क्रॉनिक एक्टिव. बहुत क्रॉनिक हो गया, टाइम अक्यूट के बाद क्रॉनिक फेज में चला गया. बट क्रॉनिक में भी समटाइम क्या होता है, एक्सजर्बेशन, सडन एपिसोड्स आते हैं जिसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाए, जिसमें अक्यूट इन्फ्लेमेशन को दोबारा आना पड़ता है. सो दैट इज योर क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लेमेशन. So basic points about what you get in acute inflammation. Acute inflammation में क्या होता है? It's basically what? Here fluid and plasma they are accumulated at your affected site. ठीक है, एक बार fluid plasma आ गए उस affected site में जहां response show करना है body को, उसके बाद there is intravascular activation of your platelets. Then in polymorpho-neutrophils जो होते हैं ना, जो neutrophils हम polymorph जिसे कहते हैं, they are the major मीडिएटर्स. यहाँ पे जो acute inflammatory cells, जो मीडिएटर नहीं सॉरी acute inflammatory cells, acute inflammation का जो प्रोटोटाइप है ना वो है polymorphs. Chronic का it is lymphoid cells. So sometimes patient can present with very severe acute inflammation. So कहते हैं fulminant acute inflammation. Similarly, second we have your chronic inflammation. Chronic में as I said कि chronic inflammatory cells होंगी जिसका प्रोटोटाइप you can say lymphocytes. Then you have plasma cells, macrophages. And along with these presence of these chronic inflammatory cells, you have granulation tissue formation as well as granulomatous inflammation. That also I'll be discussing. Granuloma per se we'll be discussing in our subsequent lectures. एक stage आता है between acute and chronic. You can say subacute inflammation हो रही है. उतना patient को acute symptoms नहीं होंगे, fever धीरे subside कर जाएगा, but रहेगा. ठीक है, increased TLC है, but रहेगी at least. ठीक है, before it goes into your chronic phase. So अब we are done with the types, we are done with the signs. Now कैसे start कैसे होता है inflammation, how it gets initiated. So here basically it is the role of three things which are mentioned here. First is कि पहले तो आपको body system should be able to recognize the etiologic agent which is causing cell injury and inflammation. Okay? Then participating host cells इन इंजूरियस एजेंट के अगेंस्ट होस्ट सेल कैसे रिएक्ट करता है, कौन से सेल्स रिएक्ट करते हैं. देन यू हैव फ्यू सर्कुलेटिंग प्रोटीन व्हिच ऐड ऑन टू इनिशिएटिंग द इन्फ्लेमेशन. सो दीज आर बेसिकली ट्रिगर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, इटियोलॉजिकल एजेंट्स, होस्ट सेल्स एंड यू हैव फ्यू सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स. सो फर्स्ट एक एक को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज योर रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर. सो डिस्टिंक्ट रिसेप्टर्स आर देयर ऑन योर होस्ट सेल्स for specific microbial agents, leucocytes and for necrotic cells. तो जो host cells है हमारे, जो important part play करेंगे inflammation में, उनके surface पे they have your receptors which have the ability to attract these agents, leucocytes or necrotic cells. ठीक है? Then second is your for recognition of microbes कैसे करते हैं हम. ठीक है, so ये हो गया pathogen. जो ये है दिस इज अ सब टाइप, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अभी जो हमने पढ़ा उसका. ठीक है, सो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं कुछ, एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन योर इन्वेडिंग माइक्रोब्स. जैसे सेल सरफेस पे तो रिसेप्टर हो गया. ठीक है, दे विल बी एबल टू अट्रैक्ट दीज पैथोजेंस. देन ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस. ठीक है, जो इन माइक्रोब के पास भी होता है सम आइडेंटिफिकेशन मार्कर, यू कैन से पैम्स, that is pathogen associated molecular patterns. So they are seen on the invading microbes जो हमारी body को invade कर रहे हैं. So these are recognized by cells other than the lymphoid cells. Lymphoid cells chronic inflammation में will deal it.
तो ये जो माइक्रोब्स हैं, जो इनके पैम्स हैं, पैम्स को कौन पहचानेगा? सो दीज आर योर एपिथेलियल सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है। एंड व्हाई, हाउ? क्योंकि इन सेल्स पे जो एपिथेलियल, डेंड्राइटिक और मैक्रोफेजेस हैं, इनके ऊपर दे हैव योर पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर which is seen on participating cells. Similarly on leukocytes जो हमारे जो polymorphs हैं, उनके पास they have receptor for Fc component of immunoglobulin antibody, and they also have receptor for complement which recognizes these microbes coated with antibody and complement. See, they need to identify ना, infection अगर हुआ, कोई microbe आया है, fine, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास सेल जो होते हैं, उनके पास रिसेप्टर भी तो होना चाहिए। तो इतने मिलियंस ऑफ सेल्स और इतने मिलियंस माइक्रोब्स में कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन इन एजेंट के अगेंस्ट प्रोड्यूस करना है, फाइन। सो दीज आर द रिसेप्टर्स against the IG antibody or the complement, so that these microbes can be easily identified by the leukocytes. So once they are identified, then they start the process of inflammation and phagocytosis starts. Then similarly, receptors for recognition of necrotic cells. नेक्रोटिक सेल्स क्या होते हैं? जब सेल डेथ होती है ना, तो साइटोसोलिक मॉलिक्यूल और न्यूक्लियर डीएनए वो रिलीज हो जाता है सेल से। तो उन सेल को हमारा रिकॉग्नाइज होता है, जो प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं, साइटोसोलिक प्रोडक्ट या न्यूक्लियर डीएनए प्रोडक्ट्स, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय योर साइटोसोलिक रिसेप्टर्स, को एनएलआरस कहते हैं। सो दीज एनएलआर जब रिकॉग्नाइज करता है साइटोसोलिक और न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, सो व्हाट दे डू, they form a inflammasome, fine, and this inflammasome will activate caspase 1, and this caspase 1 is also known as your interleukin 1 beta converting enzyme, or IC. So these activated caspase 1 secretes pro-inflammatory cytokines. Spelling mistake is there, so pro-inflammatory cytokines, right? Then as I said, recognition of receptor, and then you have your circulating proteins जो add on है. So these are liberated by activation of your complement system after any kind of infection. So इसमें आता है हमारा mannose binding lectins and collectins. So they also start acting once the invading organism has come into our body, and then process of inflammation starts. Thank you so much for your patient hearing. And in the next class, we'll start with proper inflammation, जो हम पहले vascular events and cellular events discuss करेंगे. So stay calm, love pathology. Thank you so much.